Yes, children, in today's class, let us start with question number 3 of exercise 9.2. This question is, we have to find the product of two rational numbers. The very first question is 9 upon 2 into minus 7 upon 4. Now see here, we cannot reduce anything in this, मतलब कि कोई हम किसी चीज़ को कट नहीं कर सकते, जैसे नीचे ऊपर कहीं भी नहीं, या तो कहीं क्रॉस में कुछ नहीं कटिंग हो सकता है, तो डायरेक्ट वी मल्टीप्लाई एंड राइट डाउन द आंसर. दिस इज इक्वल टू 9 into minus 7 upon 2 into 4. So 9 sevens is 63 with negative sign upon 8. Alright. Similarly this one. यहाँ पे भी कुछ कहीं कुछ नहीं कटिंग कर सकते हैं. They are written in the simplest form. So we will write this as 3 into minus 9 upon 10. So this is further equal to 9 3s are 27. With negative sign, so this is minus 27 upon 10. ठीक है. Now coming to the next one. Here also we cannot cut anything, so we directly multiply and write down. Multiply the numerators. Minus 6 into 9 upon 5 into 11. So this is what? 9 6 is 54. So this is minus 54. 11 5 is 55. So this is answer is minus 54 upon 55. Now we come to the fourth part. The fourth part of the question. Again we directly multiply the numerators and the denominators of both. So this is 3 into minus 2 upon 7 into 5. So what do we get? Minus 6 upon 7 5s are 35. Okay. Now see here. This one also we cannot cut anything. So we write this as 3 into 2 upon 11 into 5. So 3 2s are 6 and 11 5s are 55. Okay. Now coming to this. Now see this one. 3 upon minus 5 into minus 5 upon 3. Now see here, ये 3 और ये 3 कट गया, ये -5 और ये -5 कट गया. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये 5 1 जा 5, 5 1 जा 5. तो क्या हमारे पास क्या आ गया? 1 upon 1 into 1 upon 1. So we get 1 into 1, that is equal to 1. Is this clear? Right. Now coming to the next question number 4. Question number 4 is divide. We have to divide. अब divide में क्या होता है? जो पहले वाला नंबर होता है हम उसको एज इट इज़ लिखते हैं, ये -4. ठीक है. अब ये जो डिवीजन है ये चेंज हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और इसका हम रेसिप्रोकल लिखते हैं. रेसिप्रोकल मतलब ये 2 upon 3 है तो हम इसको लिख देंगे 3 upon 2. ठीक. अब आप देखो इसको और इसको कट कर सकते हो. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. तो हमारे पास क्या हो गया? -2 into 3 that is equal to -6. Is this clear? Right. Now we come to the next one. This is equal to पहले वाला हम एज इट इज़ लिखेंगे -3 upon 5 डिवाइडेड बाय, चेंज हो जाएगा किस में? मल्टीप्लिकेशन में. ठीक है. और इसका हमें रेसिप्रोकल लिखना है. अब ये 2 था तो 2 या 2 upon 1 एक ही बात है. तो अब अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 upon 2. तो अब कुछ काट नहीं सकते तो हम ऐसे करेंगे -3 into 1 upon 5 into 2. तो आंसर क्या हो गया? -3 upon 10. ठीक. Now we come to the third part. The third part is -4 upon 5. Division changes into multiplication. और ये क्या हो जाएगा? 1 upon -3. यहाँ 1 आ जाएगा नीचे, तो फिर रेसिप्रोकल लिया तो ऊपर हो जाएगा 1. ठीक है. तो ये फर्दर क्या हो गया? -4 into 1 upon 5 into -3. So this is equal to -4 upon -15, या it is equal to 4 upon 15. क्यों? क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे.
Is this clear? Okay. Now we come to the fourth part. This is equal to minus 1 upon 8. Division changes into multiplication and we take the reciprocal of this. So this becomes 4 by 3. अब ये कट सकता है, 4 1s are 4, 4 2s are 8. So we have here minus 1 into 1 numerator में और denominator में 2 into 3. So this is equal to minus 1 upon 6. ठीक है. Now coming to the fifth part. Fifth part is minus 2 upon 13 और इसका ये मल्टीप्लिकेशन हो गया और इसका रेसिप्रोकल लिया. ठीक है. सो कुछ काट नहीं सकते तो हम डायरेक्ट लिखेंगे माइनस 2 इंटू 7 अपॉन 13 इंटू 1. दिस इज व्हाट 2 7s are 14 with negative sign upon 13. All right. Now coming to the sixth part. This is minus 7 upon 12. Division changes into multiplication. Take the reciprocal of this. So this is 13 upon minus 2. So further equal to minus 7 into 13 upon 12 into minus 2. ठीक है. So 13 7 सा कितना होता है 91. 91 with negative sign. 12 2s are 24 with negative sign. ठीक है. ये दोनों कट गए and you are left with 91 upon 24. ठीक है. अब नेक्स्ट ये वाला 3 upon 13 लिखा. Division changes into multiplication and we take the reciprocal. So it becomes 65 upon minus 4. Okay. Now see 13 1s are 13, 13 5s are 65. So this becomes what 3 into 5 upon 1 into minus 4. ठीक है. So this becomes 15 upon minus 4. और इसको अगर ऊपर ले जाते हो तो यू कैन राइट दिस एज minus 15 upon 4. ये भी ठीक है और ये भी ठीक है. राइट. So with this I wind up my class. In the next class I shall start with the next topic.